this, we're actually shifting our focus to some big breaking developments now coming in. The Supreme Court has sentenced Navjot Singh Sidhu for 1 year imprisonment, and this is in the 1987 road rage case. Big setback for Navjot Singh Sidhu. That's the update that's coming in, where a 1 year jail term has now been handed over to Navjot Singh Sidhu. And as I pointed out, this is in the 1987 road rage case. We'll try and get more details. That means Navjot Singh Sidhu has been sentenced to 1 year of a jail term. This is in a road rage case that dates back to 1987. That's the word that's coming in from the Supreme Court. We'll try and get more details of what the case is about and any reactions that are coming in as well. But as of now, we're understanding the update that's coming in from the Supreme Court is that the Supreme Court, in fact, has sentenced Navjot Singh Sidhu. My colleague Pankaj Kapai is now joining us on the broadcast. Pankaj, पहले आप हमें डिटेल्स दीजिए, क्या केस था और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, 27 दिसंबर 1988 का मामला है। नवजोत सिंह सिद्धू उस समय पटियाला के शेरावाला गेट के पास जिप्सी में क्रॉसिंग कर रहे थे। उस समय एक बहस हुई थी। बहस के दौरान धक्का मुक्की हुई और एक शख्स की मौत हो गई थी। ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन उसके परिवार की तरफ से पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले लगाई गई थी। और उस सुनवाई के दौरान अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा जो है वो सुनाई है। ये एक बड़ा फैसला इस पूरे रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका के दौरान जो जस्टिस AM खालिनबरकर और संजय किशन कौल की बेंच की तरफ से सुनाया गया है। आज नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो पटियाला में मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा झटका जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को लगा है। इस केस के थोड़े बैकड्रॉप के बारे में बात करते हैं पंकज। 2018 में भी जो विक्टिम्स की फैमिली थी, उन्होंने जो वर्डिक्ट आया था जिसमें सिद्धू की पनिशमेंट को कम कर दिया गया था, वो चैलेंज किया था। आप हमें थोड़ा बैकड्रॉप देंगे कि कितना बैक एंड फोर्थ हुआ है? देखिए, क्योंकि 27 दिसंबर 1988 का मामला है, जब गुरनाम सिंह, जसविंदर सिंह और एक व्यक्ति किसी शादी के प्रोग्राम के लिए बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जा रहे थे। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू शेरावाला गेट में क्रॉसिंग कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू जिप्सी में मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। और उस समय क्रॉसिंग के दौरान मारुति कार जो है गुरनाम सिंह चला रहे थे। जिप्सी बीच में नवजोत सिंह सिद्धू की खड़ी थी। उस समय गाड़ी हटाने को कहा गया, जिसको लेकर दोनों में तीखी तकरार देखने को मिली। पुलिस का ये दावा था कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह की पिटाई की और वहां से चले गए। घायल गुरनाम सिंह जो है, जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां मृतक घोषित हो गए थे। 27 दिसंबर 1988 ये मामला लगातार कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू को राहत दी थी और कुछ जुर्माना लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया गया था। लेकिन जो परिवार था, उन्होंने दोबारा पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जब दोबारा सुनवाई की गई तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 साल की सजा जो है पूर्व कांग्रेस पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वो दी गई है। पंकज, इससे पहले हम थोड़े बैकड्रॉप के बारे में और बात करें। आप पहले मुझे बताइए, इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू के लिए? देखिए, अब नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि पटियाला में मौजूद है, नवजोत सिंह सिद्धू के वकील जो है वो दोबारा जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का रुख क्या रहता है, या नवजोत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी होगी, किस तरह से ये रुख रहेगा, ये कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि परिवार जो जब पहले सुनवाई की गई थी तो उस समय परिवार संतुष्ट नहीं था, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया और सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब दोबारा पुनर्विचार लगाई गई है, याचिका लगाई गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 साल की सजा सुनाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कई बार कंट्रोवर्सी में नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं। एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर भी नवजोत सिंह सिद्धू को जाना जाता है। और क्योंकि 1988 का मामला है, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल युवा थे। उस समय जो पूरी घटना बताई जा रही है, क्योंकि पटियाला के रहने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उस समय शेरावाला चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है कि किस तरह से दोनों के बीच तल्खी हुई। तल्खी के बाद हाथापाई तक बात हो गई, धक्का दिया गया। और पुलिस की ये तकरीर थी कि पिटाई की वजह से जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पिटाई की है उसकी वजह से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। तो इसीलिए ये पूरा मामला कई साल तक चला, लगभग 30 साल से ज्यादा ये मामला चला। और अब
सुप्रीम कोर्ट जो है 1 साल की सजा सुनाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को दे रहे हैं। एक बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जरूर है। जी, Pankaj, we'll request you to stay on with us. We'll try and get a reaction from the Congress also. Anila Singh of the BJP continues to be with us. My colleague Anvit is also joining us. Let me come to you first, Anvit. So Pankaj, in fact, has given us an overview of what this case was about, but could you just talk to us about what was the original quantum of punishment, when was it reduced, and what have we heard from the Supreme Court today? Yes, you see, Ridhima, as he has already said that SC has imposed 1 year rigorous imprisonment on former Congress Chief Navjot Singh Sidhu for 3 decades old assault case. Now, earlier the Supreme Court had let him off with just a fine of ₹1,000, but the court has revised it. However, a bench of Justice A.M. Khanwalkar and S.K. Kaul rejected plea for fastening culpable homicide not amounting to murder charged under Section 304A of the IPC. Now, if you talk about this plea, it was filed by the victim's family. They had demanded that Sidhu be charged with more serious offences. Earlier on March 25, also Sidhu's lawyer Abhishek Manu Singhvi, who had been appearing on behalf of him, he said in Supreme Court has been an extraordinary case in a negative sense, which ought not to be entertained by this court. However, now the court has taken it. They have given 1 year of rigorous imprisonment. And this is a 34-year-old incident. It was in 1988 that the incident took place. Earlier, the court had let him off just with a fine, but the plea was rejected and taken up again. And now it has been said that 1 year has been enhanced by to 1 year imprisonment. Okay. And it was a road rage case, as we know, he has already given details of it. So now it is 1 year imprisonment in this case is what the Supreme Court has said now. Okay, Anvit, I'll just request you to stay on with us. As my colleagues are pointing out, this is a case that dates back to 1988, where Sidhu allegedly had beaten Gurnaam Singh on his head, leading to his death. Then you had a Sessions Court in 1999 that had acquitted Sidhu and his associate due to lack of evidence, giving him the benefit of doubt. But today you had the Supreme Court sentencing Navjot Singh Sidhu for 1 year jail term. Swapnil Kothari continues to be with us. Anila Singh of the BJP also continues to be with us. Swapnil Kothari, let me come to you first. This is, of course, going to be a big setback, not just for Navjot Singh Sidhu, but for the Congress party as well. But what is the legal recourse available to the legal team of Navjot Singh Sidhu now? Well, I think they can go in a review and they can ask for a review and say that, look, I was already let off with a fine, but now why this 1 year rigorous imprisonment? Can you please condone that? Can you go back to the fine, or can you just make it simple imprisonment? But I think those are the two recourses available, but I don't know whether those will be workable at all or not with the Supreme Court, because if this is a 34-year-old case, I don't think the Supreme Court is going to go back into it again and just revise what it's already said. And they must have come to a conclusion after looking at all the facts and circumstances that 1 year was the appropriate decision, and it's a departure from the fine. So if there is some culpability on behalf of Sidhu, which they must have thought that there is, and they've come to this conclusion. So I don't know if there is any. You have a legal recourse, but whether that's going to be fruitful, whether it's going to fructify into something or not, it's a different issue. But I don't even know. Sometimes the Supreme Court is, abhors these kind of reviews, and it may just very well dismiss the review petition, saying that, look, we are not going to review our decision, which we made after a long period of time. So please, you have to accept whatever that is there. So that could possibly well be the answer of the Supreme Court in this particular case. Okay, I'll just request you to stay on with us.